So we can, the propeller also works on the basis of movement of the screw. So that's why we call screw propeller. So just to understand that, let us see if we have a solid plate. Let us say this is made of steel. Again, why this? So if I have a screw which I put it through this, so this is the head, and we have the threads here. Now, in order for me to put it in a plate, this is a solid plate, could be steel, for example, and that means I must have corresponding threads here. Then only I can screw it in. When I move one revolution of this, this is the hexagonal spanner. If I put it here and turn it by one complete revolution, this screw or bolt will move linearly forward or reverse by a certain distance, and that is what we call the pitch of the screw. And normally this is given in millimeter. Now here there is one important thing to note, that this plate is made of non-yielding material. It does not yield, which means when I move it forward or backward, if I keep turning clockwise, this screw will keep moving inside these threads. This remains here. It holds its position. That is why we call it non-yielding medium or material. And therefore, every time I do the same thing, I turn by one revolution. Let us say if 2.2 is the pitch, 2.2 millimeter, I turn one, it means if I turn one complete revolution, this fellow will move 2.2 millimeter. If I turn it 2 revolutions, it will move 2.2 into 2. If I give 3 revolution into 3, so and so forth. And every time, every revolution will positively give me same distance traveled. The reason is it is in a medium which is non-yielding. Now the screw propeller, the propeller on our ship is also based on the same principle. Only thing is that this medium which we are talking about is not solid, it is water. So it is moving in solid. So what I will do, I will just removing that part of this one. Actually, I should remove everything. Sorry. Let me remove this also.
So now what we have a boss, and on this boss is on this shaft, and we have the blades here. Similarly here, so let us say it is a 4-bladed propeller. In that scenario, we have two like this, one and two will be perpendicular to the screen. Now if what I'm showing is one blade which has been cut at a distance r. For example, if this is a blade, if I cut a section at a distance r from here, this is the situation which we are considering. This propeller also theoretically, because it is a screw propeller, and the blade angle will keep varying from, this is a root and this is a tip. From root to tip, if you have seen during taking draft, and if the top part is visible, sometimes when you have a trim in such a fashion and the cargo is has been discharged, that sometimes the propeller tip is visible and some part of the propeller is visible. So you will see that the angle is changing from here, from root to the tip. It is not the same angle. So if we say that this angle is theta at a particular distance r, then when I rotate this section through one complete revolution, it will move forward. Now that means that in this plane, the distance traveled is 2 pi r of this section, because it is at a distance r. So this section will travel distance equal to 2 pi r perimeter. So I am just taking from the center line, I am taking a line here and calling it 2 pi r, and forward it will move equal to the pitch, and the angle over here is theta, although we are trying to make similar, but there may be small. So this distance is a 2 pi r. This distance moved forward. Now just imagine if it was a screw, it would have moved forward by 2.2 millimeter if it was a screw, and now we have a propeller, it will move forward by a distance p meter, which is the pitch of the propeller, and this is the angle theta. So I can safely write here tangent theta is equal to perpendicular over base, so p over 2 pi r, or we can say pitch can be written as 2 pi r tangent theta. This is the equation you just write down, and we will be using it in numerical. Nobody is asking you to develop this relationship, but use of it is what we need. So in this, we have seen that N1, what we have assumed, that the propeller is moving in water, but water does not yield, it does not give way, correct? It does not give way, and if it does not give way, just like a screw going into a steel plate or a door, or a screw going into the wood, where the wood stays in place, the screw will move equal to distance p, and a section from at a distance r will this. All right, so this section at a distance r is making an angle theta, right? If I go further from, now r can be anything, it can be 1 meter, it can be 1.5 meter, and angle, as we have seen, from root to tip is varying. So this theta will keep varying
if I take, let us say, 5 readings of different R. For example, if R can be is equal to 1 meter, 1.5 meter, 2 meters, 2.5 meters, and 3 meters. 1, 2, 3, 4, 5 readings. And theta is given as 28, 30, 32, 35, and 40, for example. 1, 2, 3, 4, 5. Then what all I have to do is calculate the value of tangent theta at these angles given and put the value of r, which is given corresponding only. If at 1 meter it is 28 degrees, put the value of r and the value of the corresponding theta, calculate the value p. In fact, I would prefer to write is a small p, don't write capital P. Capital P represents the mean pitch. So I will get 5 readings of this P, P1, P2, P3, P4, P5. Calculate sum of this. Add all these values. So P1 plus P2 plus P3 divided by number of readings, or 5. Let us say in this case, this is the mean pitch of the propeller, mean pitch. This will represent with capital letter P and will be in meters, correct? Meters. Because here we are dealing with meters. So this is how we will do. And if the numerical comes like this, please, we can do it very quickly and get full marks, because and you can use your calculator, so no problem. So let me just let us do one numerical at least on this, and then we'll move to the. Can you explain mean pitch again? Pardon? So can you please explain mean pitch, the formula for mean pitch again? Okay. So this is the P is the pitch of a section of propeller blade at a distance r from the center line of the shaft. This is the center line of the shaft. This is the tail shaft, correct? इसके बाद यहाँ ये मेरी शिप साइड ऐसे आ जाएगी ना, तो यह टेल शाफ्ट है, उसके बाद यहाँ तक टेल शाफ्ट है, फिर वी हैव द इंटरमीडिएट शाफ्ट, सो सेंटर लाइन ऑफ दिस. तो आर डिस्टेंस पे थीटा इज द एंगल एट दैट सेक्शन. ये जो सेक्शन दिखा रखा है, दिस इज द थीटा. ये कट किया हुआ है, इसीलिए ऐसा ब्लेड का सेक्शन ऐसे दिखेगा ना जब आप कट करेंगे. सो P is this. So let us say first reading, suppose 5 readings हैं. So I will get P1 is equal to 2 pi R1 tangent theta 1. This is one reading. Similarly, you will get P2, which will be 2 pi R2 tangent theta 2. So like this, suppose I have 5 or 6, जितनी भी हैं. For example, 5 readings. Then mean pitch P, capital P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 divided by 5. ठीक है? That is mean pitch. This is what is quoted. Now we are taking 5. I can take 500 values, or I may use a software where I can or integration from 0 to this tip
depending on what is the diameter. This is the diameter of the propeller. यहाँ से यहाँ तक. This is the diameter. So there are various methods, but for us we are calculating at different sections. एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, and then we are calculating what is the mean. That is the mean pitch of the propeller, and represented by capital P. That is what we will be using in for calculation. Is it okay? Clear? Yes, sir. Okay. So now I will open the PPT, and first we will use this function if did not slip with reference to or with respect to the water. Correct? If I assume that the water is solid, just assume, that is what will make it non-yielding. That means it is holding its position. वहीं का वहीं रहे, पानी ना हिले, सिर्फ blade जो है ना propeller, blades are only moving in water. Water is staying there like a steel or like a wood, solid material. Then in one revolution, whatever is the distance moved by the propeller is the pitch of the propeller. एन एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि अगर जो स्क्रू है वुड में डाल रहे हो या स्टील में, तो स्टील वहीं रहता है ना, तो हर बार हमको एग्जैक्टली वही पिच मिलती है, फिजिकली करेक्ट ऑलवेज. लेकिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं ये क्योंकि इसको हम थ्योरेटिकल वैल्यूज कहेंगे, क्योंकि ये और स्पीड भी प्रोपेलर की, दिस विल बी इवेंचुअली विल कॉल इट थ्योरेटिकल, क्योंकि एक्चुअली में तो पानी हट जाता है. एज द प्रोपेलर इज मूविंग वाटर गिव्स वे, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप विल कम. सो फॉर द टाइम बीइंग, pitch is the distance that a blade would move forward or backward in one revolution if did not slip with respect to water. उसके बाद अगर r distance पे if we consider a section, that is how theta, which is called pitch angle also, then 2 pi r is the circumference, tangent theta is pitch by 2 pi r, and therefore pitch is 2 pi r. This is the example I gave you. This is the theta. This is the distance moved by this section in this plane perpendicular to the screen, also perpendicular to the center line. So that is how in this direction it is 2 pi r. This will move forward equal to pitch एक revolution में, and that is how we can say if I take tangent of this angle, this will be pitch by 2 pi r, or pitch will be equal to 2 pi r tangent theta. So this is the relationship which we have developed. Now, this will come later. If you want to note, you can note also. Pitch is also given by a pitch ratio. But anyway, we'll come to it later on also. So pitch can be calculated by this ratio. If I know the pitch ratio into propeller diameter. But this is later, not at the moment. Let us stick to our. So if we have this type of questions have come in exam, but as a part A, 2-part question. So because it is a direct application, so examiner just wants to test whether you know, and then normally it is one part of the question. So the pitch angles of the propeller blade measured at radii of 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 meters respectively are 42, 31, 25, 22.5. So 1, 2, 3, 4, 5 ही रीडिंग है इसमें भी. हाँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 5. Calculate the pitch of the propeller. तो निकाल लीजिए आप डायरेक्ट 5 वैल्यूज निकाल के, you can calculate.
So 6.03 hour. 6.03 हाँ ठीक है करेक्ट। तो ये आप ना अपने स्टैंडर्ड ये आए ना आए आ भी सकता है क्वेश्चन ये तो ध्यान में रखना ये 2 पाई आर टेंजेंट थीटा फार्मूला है। कई बार 2 पार्ट में आ गया ना न्यूमेरिकल तो आधा न्यूमेरिकल आप फटाफट कर सकते हो बड़े आराम से बिना सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आया हुआ है पास पेपर में ऐसा आया हुआ है मे बी डिफरेंट आर एंड थीटा वैल्यू बट इट हैज़ कम। तो इसलिए हम एक ही न्यूमेरिकल इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। आएगा तो ऐसे ही आएगा वैल्यू 4 की 5 दे दे 5 की 6 दे दे लेकिन आता है तो ऐसे ही आता है। तो ये एक हो गया फार्मूला हमारा। अब हम आते हैं प्रोपेलर स्पीड पे। सो लेट मी propeller speed. The distance the propeller would advance in unit time if working in a unyielding fluid. अब हमने इसको पहले ही कहा है कि दिस प्रोपेलर इज लाइक ए स्क्रू। तो अगर एक रोटेशन लेगा if it moves by one revolution how much distance it will move forward? P, capital P। अभी हमें small p नहीं, P is this is the mean pitch which is also indicated in ship's particular or in propeller manual on board. P is the pitch. Now we know that if the propeller is making one complete revolution propeller will move equal to P meters। meters में है ये pitch is in meters। So assuming that the water holds its position unyielding, that is why in the definition also it is written unyielding fluid, the distance the propeller would advance in unit time if working in a unyielding fluid is called the theoretical or propeller speed। तो speed is nothing but distance per unit time, correct। तो Vt इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Vt से। T रिप्रेजेंट्स थियोरेटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एज्यूम करके चले हैं कि पानी हिल नहीं रहा अपनी जगह से, सिर्फ प्रोपेलर ब्लेड उसमें मूव कर रहे हैं। सो इट विल मूव इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस p। अगर n rpm है, इफ rpm ऑफ द प्रोपेलर इज n, इसका मतलब है इन 1 मिनट it will have n revolutions। that is the meaning of rpm, and every revolution it moves p meters, therefore it will move in 1 minute p into n, so many meters in 1 minute। and if p into n meters per minute multiplying by 60 will give me so many meters in 1 hour, and converting into nautical miles or knots I divide by 1852, it gives me answer in knots। so propeller speed theoretical in knots is given by p into n into 60 divided by 1852, where p is the pitch in meters, n are revolutions per minute। Please remember propeller speed will be written as Vt only, Vt, this suffix is T, T will represent theoretical speed, correct, or propeller speed। तो in order not to have any confusion as I told you, we जो हमने पहले न्यूमेरिकल भी जो किए हैं उसमें हमने V रखा हुआ था सेफली वेसल की स्पीड के लिए इन नॉट्स। याद है कि नहीं है? पिछले जितने न्यूमेरिकल किए हैं we used V as the vessel speed in knots, and this was knots means nautical miles per hour। similarly we use small v as speed but in meters per second। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हम न्यूमेरिकल में आपस में गलती नहीं कर सकते। जहां हमें नॉट्स में यूज करना है वहां हम कैपिटल V यूज करेंगे। दिस इज ओवर ग्राउंड, इसलिए ये वाली स्पीड इज ओवर ग्राउंड। जितने भी हमने न्यूमेरिकल अभी तक किए हैं सब में जहां V यूज किया है वी हैव दिस वैल्यू एज ओवर ग्राउंड
speed of the vessel and in knots, that means nautical miles per hour. Small v is also overground but in meters per second. ये हमें ध्यान रखना है. और vt हम यूज कर रहे हैं प्रोपेलर स्पीड के लिए, लेकिन हम किस में, ये नॉट्स में, नॉट्स. तो अगर मुझे ये न्यूमेरिकल में निकालनी पड़ेगी आपको vt. कहाँ से निकालोगे? p से और n से. rpm दी होगी और पिच दी होगी. सो vt इज p into n, or rather pn 60 over 1852, where n is the rpm. So we must remember and write down this equation. vt or the propeller speed is equal to pn 60 over 1852. अपने फॉर्मूला में लिख लीजिए. where and v is the normal ship speed over ground. अब हम आते हैं स्लिप. एंड सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्लिप. पहले हम बात करेंगे एपरेंट स्लिप की. एपरेंट स्लिप इज रिटन एज AS, शॉर्ट में AS. और एपरेंट स्लिप, तो एक तो ये एपरेंट स्लिप होती है, दूसरी होती है ट्रू स्लिप और रियल स्लिप. सो सेकंड इज ट्रू और रियल. तो ये दो टाइप की स्लिप हैं. वन बाय वन वी विल डू. पहले लेते हैं हम एपरेंट स्लिप. Actual distance the ship moves forward is less than the theoretical distance because as the propeller works in a water, there is always a certain amount of slip. क्योंकि हमारा ये सॉलिड में नहीं जा रहा है, तो theoretical speed और speed over ground will not be same. Correct? अभी इस टाइम में अपना आप दिमाग में चलाइए कि कभी v ज़्यादा हो जाती है या vt कम हो जाती है, वो अलग है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, करंट्स, विंड, वो बाद में, अभी नहीं. राइट नाउ एज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी नहीं है, ना वेव है, ना विंड है, ना वेक फॉर्मेशन है. सिंपली बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रोपेलर पानी जो है आ गया है. पहले सॉलिड में अगर जा रहा होता मेरा जहाज, सॉलिड मटेरियल में, यानी कि लोहे के अंदर होता वो या लकड़ी होता पानी की जगह, और मेरा प्रोपेलर घूमता जाता, तो हमारा vt और v सेम होता. दैट मीन्स स्पीड ओवर ग्राउंड एंड दिस प्रोपेलर स्पीड वुड हैव बीन सेम. बट सिंस द वाटर इज ए यील्डिंग, इट गिव्स वे, इसलिए थोड़ा दोनों में डिफरेंस आता है. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द स्लिप. सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपेलर स्पीड and the ship speed, that is the slip, but it is expressed as percentage of the propeller speed. तो डिफरेंस को ही हम स्लिप कहते हैं. सो प्रोपेलर स्पीड माइनस शिप स्पीड, मान लो दोनों में हाफ नॉट का फर्क आया या 1 नॉट का फर्क आया, दैट डिवाइडेड बाय प्रोपेलर स्पीड. कितनी परसेंटेज है चेंज इसमें, क्योंकि आपकी v विल बी लेस देन vt. v विल बी ऑलवेज लेस देन vt, कंसिडरिंग द assumption which I have already told you कि कोई विंड नहीं है, कोई करंट नहीं है, कुछ नहीं है. अगर ये सब बातें वो बाद में आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव स्लिप, लेकिन अभी के लिए वी हैव नथिंग. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो vt विल बी ऑलवेज मोर देन v. करेक्ट? देयर विल बी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन vt एंड v. दैट इज अपरेंट स्लिप. करेक्ट? सो प्रोपेलर स्पीड माइनस शिप स्पीड डिवाइडेड बाय प्रोपेलर स्पीड इनटू 100 परसेंटेज में लेना है. सो फार्मूला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ. AS apparent slip is equal to VT minus V over VT into 100. This is one formula which we will be using to calculate the apparent slip. और अगर apparent slip दी हो, मान लो apparent slip दिया है कि 5% है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 5% में 5 यहाँ लिखूंगा. लेफ्ट हैंड साइड विल बी 5 और इधर 100. अगर मेरे को ये 100 नहीं लिखना है तो 5/100 लिखूंगा मैं. ठीक है ना? तो 0.05 हो जाएगा. अदरवाइज 5 विल बी इक्वल टू vt माइनस v, जो भी ये वैल्यूज में पता होंगी. vt तो हम पहले से निकाल के रखेंगे, इंटू 100 ऐसे आएगा मेरा. ये ध्यान रखें, क्योंकि मैं इसलिए बार बार, हालांकि ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है,
लेकिन क्योंकि हम देखते हैं ना कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर लेते हैं कि ये ऐसे या तो 100 छोड़ देंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, और दोनों चीज़ें हमारी 5 है या 100 है। अगर 100 नहीं लिखना तो ये 0.05 हो जाएगा, 5%। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा गलती ना करें। बेस्ट इज़ टू राइट 5 हेयर एंड कीप 100 ऑल्सो, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में VT माइनस V बाई VT इंटू 100 इज़ द स्लिप। तो जितने परसेंट स्लिप दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में 5% है तो 5, 10% है तो 10, और इस साइड में इंटू 100 तो लिखना ही लिखना है। अब हमें अगर तो स्लिप दे ही रखी है तो VT या V में से कोई एक चीज़ तो दी होगी, है ना। तो नॉर्मली हमें VT दिया होता है, VT दिया नहीं होता, निकालना होता है। तो VT हम कहाँ से निकालते हैं? PN60 ओवर PN60 डिवाइडेड बाई 1852। ये फॉर्मूला हमने पिछले थोड़ी देर पहले ही किया है। तो VT निकल आया अगर उसमें हमें RPM पता हो। अगर RPM पता हो और पिच पता हो तो हम VT निकाल सकते हैं। अगर VT निकल आया और स्लिप दे रखी है तो V निकल आएगा, और अगर V दिया हुआ है, स्लिप पूछी है तो स्लिप निकाल लेंगे। विच एवर एक चीज़ हमारी अननोन होगी इस रिलेशनशिप में। सो दिस इज ए एपरेंट स्लिप फॉर्मूला। अब ये जो एपरेंट स्लिप है, अब हम आते हैं एक्चुअल पे। अब डे टू डे में हम देखते हैं कि कई बार तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आती है नॉर्मली, है ना। नॉर्मली वी गेट पॉजिटिव स्लिप क्योंकि VT इज मोर देन V। शिप की स्पीड कम मिलती है क्योंकि इधर बिकॉज ऑफ द बैड वेदर और बिकॉज ऑफ द हल फॉलिंग से भी हमारी कम हो जाती है। अगर फॉलिंग बहुत हो, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो भी कम होती जाती है स्पीड, थियोरेटिकल से कम आएगी। एडवर्स करंट हो, विंड हो, फ्रॉम हेड विंड्स हैं अगर। लेकिन देर आर केसेस वेयर वी हैव फॉलोइंग करंट, पीछे से 4 नॉट का करंट मिल रहा है आपको, विंड भी आगे कोई खास वास नहीं है, तो क्या होता है हमारी V ज़्यादा इससे ज़्यादा हो जाती है VT से। तो हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारी स्पीड इंजन की बहुत ज़्यादा मिल गई है। एक्चुअली ये हमारे एफर्ट से नहीं मिली है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इंजन। सो वी हैव टू एनालाइज समटाइम्स कि व्हाट इज़ द रीज़न। सो बोथ वेज, अगर इफ वी हैव 4 to 5% इज ओके, बट इफ द पिच इज मोर वी मस्ट एनालाइज व्हाई द पिच इज मोर। पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव आई है देन वी हैव टू सी व्हाई इट इज कमिंग नेगेटिव। तो नेगेटिव का भी यही है कि फॉलोइंग करंट्स होंगे तो ही नेगेटिव है, तो एक्चुअली है कि नहीं है या क्या रीज़न है, ये हमें एनालाइज करने को ज़रूरत पड़ती है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वी कैन गेट दिस स्लिप। पॉजिटिव वी विल गेट, or more positive we will get if we have adverse weather conditions, or if weather is good then we may have what do you say, falling on the hull. अगर वो भी नहीं है, suppose falling भी नहीं है, adverse weather भी नहीं है, then there is a possibility my propeller is damaged. So we have to see and isolate कि अच्छा ये तो नहीं है क्योंकि हमारा वेदर तो बहुत बढ़िया है, और फॉलिंग भी कुछ नहीं है क्योंकि अभी अंडर वाटर क्लीनिंग कराई थी या ड्राई डॉक हुआ था या जो भी रीज़न था, और वी हैव नॉट गॉन टू ट्रॉपिकल वाटर, एंकरेज पे भी ज़्यादा नहीं रुकते हैं। सो लाइक दैट वी हैव टू कीप आइसोलेटिंग, देन फाइंड कि क्यों आ रही है भाई इतनी स्लिप हमारी, देन वी कैन, दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि भाई हो सकता है प्रोपेलर के ब्लेड्स डैमेज हो गए हो, अभी उतनी पिच नहीं मिल रही मेरे को। सो दिस इज़ हाउ it has to be analyzed. Anyway, now we in question also sometimes they say what is the reason, ऐसे पूछ लेते हैं, एक लाइन दे देंगे, उसके 2-3 नंबर या 5 नंबर की होगी 25 में से, तो आपने फटाफट लिख देना उसको इसी बेस पे जो हमने अभी डिस्कस किया। तो एपरेंट स्लिप, ये हमारा फार्मूला हो गया स्लिप का। पहले हम एक एपरेंट स्लिप का एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। द पिच ऑफ द प्रोपेलर इज 4.9 मीटर and the speed of the ship is 13.5 knots. The propeller is running at 95 rpm. Calculate the apparent slip of the propeller. Unless and until mentioned, which will be taken as apparent slip? Please remember, अगर उसने लिखा हुआ है what is the real slip, तभी हम real slip की बात करेंगे। अगर उसने सिर्फ slip की बात की है, slip इतनी है, it is apparent slip. If he has to mention it is a real slip, then he will say real slip is so much. Real और true वो फिर हम बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं apparent slip को। तो apparent slip का ये फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल है, इसको जरा करिए।
Sir, 10.48. 10.48. 10.48 10.5 ठीक है, इज ओके सबको। अच्छा अभी तो मैंने पूछा नहीं, बट एनीबडी हु हैज नॉट फॉलोड एनीथिंग सो फार, क्योंकि फिर हम इससे कॉन्सेप्ट में रियल में चले जाएंगे। अभी तो अपरेंट स्लिप ही है। सबका आ गया अपरेंट स्लिप का? किसी को कोई डाउट है? वी हैव ये न्यूमेरिकल में भी आ गया, क्लियर है। डायरेक्ट एप्लीकेशन एनीवे सो फार। सर इसका कोई यूनिट भी रहता है किस चीज का? अपरेंट स्लिप का? क्यों नहीं रहता? एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो परसेंट जितना जो भी वैल्यू आई उतने परसेंट, ओके। क्योंकि डिनोमिनेटर में वो है ना वीटी है, तो वीटी माइनस वी ओवर वीटी इंटू 100 परसेंटेज में 5%, 6% परसेंट में ही लिखते हैं इसको। तो ये ट्रू स्लिप का परसेंटेज है। लॉस जो हो रहा है ना, डिफरेंस जो स्पीड का आ रहा है, इट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो स्टैंडर्ड है, अगर डैमेज नहीं हुआ है प्रोपेलर तो थ्योरेटिकल स्पीड तो वही रहनी है ना, एज पर द पिच। अब सारा तामझाम जो है मिल कितनी रही है उसका ही है, तो इसलिए जो डिफरेंस आ रहा है वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि चेंज नहीं हो रही, थ्योरेटिकल वैल्यू और वो चेंज नहीं हो रही, उसके रेफरेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। ओके अभी हम इस पे पहले आ जाते हैं। दोनों में कोई भी वर्ड यूज किया हो मीनिंग सेम है, ट्रू। Now let us see first to understand this true sleep or real sleep. फॉर्मूला तो मैं सीधा दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना भी अच्छा ही है। Now let us see if this is a this is what happened when we are joining a ship or signing off and we are at the airport. We have the walkways where you have the belts, you just walk on this. So although we can just walk on the side if you have the shops around also, but so many times we prefer, if we are tired especially and we have our suitcases little heavier, I don't want to walk because distance is too much, so I just stand here on the walkway and this is the belt which is moving. I just keep standing here and I will reach from here to here. यहाँ से मेरा गेट है जहाँ से मैंने फ्लाइट लेनी है आगे। Now let us say if this belt is moving with a speed of VW, this is the belt speed. So if I don't walk at all, I will be traveling with a speed of VW over ground. With reference to ground, I am traveling at a speed of VW knots. अभी knots ही ले लेते हैं क्योंकि हमने ship से ही relate करना है इसको. So this is my speed although I am not walking. Now if I start walking with a speed, let us say VA, this is my speed and belt is also giving me VW. So my speed V, टोटल स्पीड ओवर ग्राउंड, वी तो हमेशा ओवर ग्राउंड ही हम लेते हैं, सो मेरी स्पीड जो है दैट विल बी इक्वल टू VA प्लस VW। इज करेक्ट? नाउ वी कम टू द शिप। यहाँ तक ठीक है ना? इफ माई स्पीड विल बी सम ऑफ माई एफर्ट्स जो मैं चल कर रहा हूँ, और ये फ्री की मिल रही है मुझे, ये तो बेल्ट से VW थी, तो मेरी एक्चुअली स्पीड हो गई VA प्लस द स्पीड ऑफ द बेल्ट. So V, my speed over ground with reference to ground is VA plus VW. This is the relationship which we will see here on the ship as well. So if this is a ship and we have the propeller here, we have the water up to here. Now as the vessel moves forward, there is a
molecules of water and steel. Because of the friction between the two, the vessel will try to move these water molecules along with this in the forward direction, and that is how what we call as the wake. This is the wake which has formed. This is moving, starts moving at a speed of VW. The propeller which is behind, correct, when it enters this wake, it is providing a speed with reference to the wake, and that speed is VA. This VA is called the speed of advance. Therefore, eventually the vessel speed over ground is sum of speed of advance plus wake speed. Therefore, we have a term which is called true slip. So true slip is given by Vt minus Va, not V. Vt minus Va divided by Vt into 100. It is on the same lines as we discussed here, but this Vw, we are purely because of the not because of wind, not because of current, not because of anything else, is purely because of the friction between the hull and the water molecules. And that is what we, and this wake speed what we have referred to here is dependent upon the vessel speed. Correct? ऐसा नहीं कि इसकी कोई, because it has nothing to do with propeller directly, coupled थोड़ी है ये waves. So it is because of the friction, and that friction will depend at what speed the vessel is moving, and therefore the vessel, this VW, which is called the wake speed, VW is wake speed. सब है नोट्स में, है इसलिए there is I can always write in notes. So speeds are all notes here, and VA is called the speed of advance, and let us introduce, because the wake speed is in a certain proportion to the vessel speed, and therefore we introduce a small w. This small w is called wake fraction. This wake fraction, this VW actually is small w into V. That means this is wake fraction into the speed of the vessel. It is a certain percentage. So if you multiply the vessel speed with the W, you will get what is the wake speed. So it is in a, and there are other methods of calculating. Also I will tell you later, but let us, there is a relationship on the basis of Bloch coefficient. If I know the Bloch coefficient of the vessel, I can calculate this wake fraction, but sorry, this small w wake fraction. But I will come to that later. Let us first establish these few things here which will be helpful to us in numerical. So W is the wake fraction, and wake fraction is defined as follows. Wake speed is a certain part or certain fraction of the vessel speed, because it directly depends on, more is the speed, more is the friction, more will be the wake speed. So that is how this is here, and this is equation number 1. So if I put the value of VW in equation number 1, let me say this is 2. If I put in 1, what I will get? V will be equal to VA plus, in place of VW I can use the term W into V. So WV, let me write it, correct, and therefore I can write VA is equal to, इसको मैं इधर ले गया लेफ्ट में, ये इसको लेफ्ट में ले गया और इसको राइट में ले आया,
सो वी ए इज इक्वल टू वी माइनस डब्ल्यू वी, और अगर मैं वी बाहर ले लूँ ब्रैकेट के तो 1 माइनस स्मॉल डब्ल्यू. सो वी ए इज इक्वल टू वेक स्पीड ऑफ एडवांस. तो ये मेरा रिलेशन आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ 3. ऑलराइट, सो वी ए स्पीड ऑफ एडवांस इज इक्वल टू वी within bracket 1 minus w, where w is the wake fraction. So if I want to know what is the speed of advance for my vessel, all I have to know is v, and w I can calculate. How I will show you, but if I can, then no problem. Sometimes it is given, sometimes I can calculate. If I know the, वो ब्लॉक कोफिशिएंट के लिए देना पड़ेगा उसको. ब्लॉक कोफिशिएंट के लिए अगर उसने डेटा दे रखा है तो मैं निकाल लूँगा, ठीक है ना. वो न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो ही जाएगा ना, फार्मूला डालते. बट अभी के लिए ठीक है ना, वेक फ्रैक्शन अगर मुझे पता हो, मान लो 0.12 है या 0.3 है, ये 0.4 है, तो स्पीड ऑफ एडवांस आई कैन कैलकुलेट बिकॉज v इज नोन टू मी. यहाँ मैं वैल्यू डालूंगा, मेरे को v आ जाएगा. अगर v आ गया तो ट्रू स्लिप आई कैन कैलकुलेट बाई vt माइनस va ओवर vt इंटू 100. दिस फॉर्मूला आई कैन यूज. ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ये देखने के लिए था कि कैसे हमने शिप पे भी किया है. सो आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ. सर हाँ जी, पास पेपर देख रहा था, उसमें वेग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला था उसने क्वेश्चन में. तो वो विद रिस्पेक्ट टू जो v इक्वल्स टू va प्लस vw उससे आ जाता है, या विद रिस्पेक्ट टू आप कह रहे हो वेग फ्रैक्शन का सारा फंडा दिया रहेगा क्वेश्चन. देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, हमने अभी तक क्या रिलेशन निकाला. एक तो समराइज कर देते हैं ना. एक तो ये हमारा निकला v इज इक्वल टू वी ए प्लस वी डब्ल्यू, ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1. हाँ जी सर. एक तो ये हमें पता है. एक हमारे पास ये वाली रिलेशन है, ट्रू स्लिप इज इक्वल टू वी टी माइनस वी ए बाई वी टी इंटू 100. दूसरा ये लो क्या, और तीसरा रिलेशन ये है मेरा, वी ए इज इक्वल टू वी माइनस डब्ल्यू. इन्हीं तीन से हमारा निकल आएगा. वो अब न्यूमेरिकल में इफ ही इज गिविंग मी वेग फ्रैक्शन इज 0.3 फॉर एग्जांपल, तो मुझे और कुछ करने की क्या जरूरत है. मैं 0.3 इसमें डाल के इस बार ये वाली इक्वेशन यूज करके निकाल लूंगा वी ए. ठीक है ना. हाँ जी सर. अगर नहीं दिया उसने कहा कि ब्लॉक कोफिशिएंट इतना है, तो हम ब्लॉक कोफिशिएंट का फार्मूला है ये निकालने के लिए, वो वाला लगा के डब्ल्यू निकाल लेंगे. निकालना तो डब्ल्यू ही है हमें ना, डब्ल्यू निकालने से वी निकल आता है मेरा. तो वी हैव टू कैलकुलेट. वो या तो डायरेक्टली दिया होगा तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, नहीं तो अगर उसने डब्ल्यू भी निकालने को पूछा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो हम डब्ल्यू की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर निकाल के इसमें फॉर्मूले में डालेंगे और वी निकाल लेंगे. ठीक है ना. हाँ जी सर. तो जो पास पेपर करेंगे ना, हम अभी किए थोड़ा है, तो उसमें डब्ल्यू किसी में दिया होगा, किसी में नहीं दिया. ज़्यादातर दिया होता है, 99% केस में दिया होगा. किसी एक केस में नहीं दिया तो सी भी दिया होगा, ब्लॉक कोफिशिएंट इज सो मच. और अगर ब्लॉक कोफिशिएंट नहीं दिया है तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एल बी डी देगा, एल इंटू बी इंटू डी, है ना, वही तो ब्लॉक कोफिशिएंट है हमारा. तो डिस्प्लेसमेंट ओवर दिस से हमारा सी भी निकल आता है, तो सी भी निकल आया तो हम डब्ल्यू निकल आता है, तो ऐसे निकाल लेते हैं. तो वन ऑफ दिस विल बी गिवन, डोंट वरी. वो हम करेंगे न्यूमेरिकल, ऐसा निकालेंगे हम, ये चीज़ भी डालेंगे उस फॉर्मूले में, ताकि. लेकिन अभी हमें इन प्रिंसिपल हमने क्या सीखा है कि हमें ट्रू स्लिप के लिए चाहिए होता है वी टी और वी ए, ये दो चीज़ें चाहिए होगी. तो वी टी तो हमारा निकल आता है फॉर्मूले से, कौन से निकलता है, PN60 ओवर 1852. ये हमें याद ही रखना है, PN60 ओवर 1852 ये वी टी है. ये तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये हमें निकालना ही पड़ेगा. पिच दी होगी, आरपीएम दी होगी, तो हमने फट से इसमें डाल के वीटी निकाल लेना है. अब हमें ट्रू स्लिप निकालनी है तो भी वीटी चाहिए, और नॉर्मल अपरेंट स्लिप निकालनी है तो भी वीटी चाहिए.
यहाँ पे VA की जरूरत है हमें ट्रू स्लिप के लिए। स्पीड ऑफ एडवांस, स्पीड ऑफ एडवांस जो है वो हमें निकालने के लिए या तो अगर उसने वेक स्पीड दे रखी है, मान लो उसने कहा वेक स्पीड इज 1.5 नॉट्स ना, तब तो हमारा V हाँ जी पता सर, है उस क्वेश्चन में उसने रियल स्लिप दे रखा है, तो रियल स्लिप का दे रखा है तो सीधा हमारा VA की वैल्यू निकल जाएगी। VA की वैल्यू नंबर 3 वाले में डाल के हम वेक फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि क्या दे रखा है उसने। अगर यहाँ वाले में ट्रू स्लिप पहले ही दे रखी है उसने और VT हमें पता, तो VA निकल आया, फिर हमें इधर ये वाला फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। ये फार्मूले की तब जरूरत है जब हमें ये ट्रू स्लिप वगैरह नहीं दी है उसने, है ना। तो क्या गिवन है उसके बेस पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। अगर ट्रू स्लिप है तो यहाँ से V निकाल लो, और अगर ट्रू स्लिप नहीं है और VA, ट्रू स्लिप हमें निकालनी है तो उसके लिए VA चाहिए अगर हमें, तो VA निकालने के लिए अगर वेक फ्रैक्शन दिया है तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर उसने वेक स्पीड दे रखी है तो V इजिकल टू VA प्लस VW, यहाँ से VA निकाल लेंगे। तो ये 2-3 हैं, यही हैं 2-3 इक्वेशन जो हमने अभी लिखी है, इन्हीं से निकल आएगा सारा कुछ हमारा, ठीक है। तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हो गया मेरे ख्याल से आपका टाइम हो गया लंच का, ठीक है। सो टुमारो वी विल सी टुमारो एंड विल डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। ऑल राइट, ओके।